डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एवं कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अंतर। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग को अर्ध न्यायिक क्वासी जुडिशियल प्रक्रिया के तहत मान्यता प्राप्त है। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में कार्यवाही संभावनाओं की प्राबल्यता पर आधारित प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैक्ट्स होता है, जबकि कोर्ट प्रोसीडिंग सत्यता से परे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट सिद्धांत से विस्तारित होता है। माननीय कोर्ट जब किसी मामले में किसी कर्मी को दंडित करता है तो यह माना जाता है कि माननीय कोर्ट द्वारा दिए गए दंड के उपरांत अनुशासनिक कार्यवाही के तहत दिए गए दंड का कोई आधार नहीं है, इसीलिए कोर्ट के आदेश के अनुरूप संबंधित कर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। करप्शन। Definition given by Sri Nagarajan Vittal, ex-chairman, CVC and accepted by Government of India. Corruption is dishonest behavior by those in positions of power such as managers or government officials. Corruption can include giving or accepting bribes or inappropriate gifts, double dealing, under the table transaction, manipulating elections, diverting funds, laundering money and defrauding investors. Corruption, any misuse of office or official procedure. D&A, when applicable. आचरण नियम 1966 के किसी नियम का उल्लंघन होने पर कुल नियम 26, कोडेड प्रोविजंस का उल्लंघन होने पर। What is charge sheet? A document showing charges alleged with violation of an order or rules having prima facie evidence. आचरण नियम का इतिहास। History of Conduct Rules. 1869. Government issued orders regarding lending and borrowing by NG servants and then 1890 by gazetted officers. 1876. Government issued instructions in connection with acceptance of gift. 1881. Government issued instructions for buying and selling of house and other valuable properties. 1855. Making of investments, promoting and managing companies, engaging in private trade and employment, habitual indebtedness, insolvency, etc. 1925. Government Servant Conduct Rules issued. 1956. First codified set of conduct rules for the realized servants issued. 1962. Santhanam Committee constituted. 1964. Report submitted by Santhanam Committee. 1966. As a result of Santhanam Committee report, the conduct rules were further amended and revised, which are known as the Railway Service Conduct Rules 1966. Framing of charge sheet. Use clear, simple, precise, factual language. Don't use he, she or you. Always use Shri or Srimat. Always indicate date, place and time of offense. Indicate the correct reference of violated rules for each leveled charges. Don't multiply or club charges. Refrain from including charges for which already penalized. A person can't be hanged twice for the same offense. Theory of double jeopardy. Always remember RB number 012015, by which 18 sub-clauses have been added in Rule 3 of 1 of Conduct Rules 1966. Remember, initiation of disciplinary action leads to punish guilty only. It is not a tool to improve an official. डिसिप्लिनरी एक्शन का कॉस्टली प्रक्रिया है। औसतन 01 माइनर DA एक्शन के डिस्पोजल में 50,000 रुपए का खर्च आता है, अतः व्यावसायिक दृष्टि से अत्यंत आवश्यक होने पर ही इसका उपयोग करना चाहिए। सनद रहे दंड से अधिक महत्वपूर्ण क्षमा होती है। D&A consists 31 rules and 3 schedules. पार्ट 1, रूल नंबर 1, नोमेनक्लेचर। इसे हिंदी में रेल सेवक अनुशासन एवं अपील नियम 1968 तथा अंग्रेजी में द रेल सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1968 के नाम से जाना जाता है। रूल नंबर 2, डिफिनिशंस, परिभाषाएं जैसे DA, AA, कमीशन, रेलवे सर्वेंट, सर्विस शेड्यूल, HOD और CHOD और PHOD etc. परिचय। संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत प्रेसिडेंट के अनुमोदन से तैयार। वर्तमान में प्रभावी नियम 1/10/1968 से लागू। इसमें कुल 7 पार्ट, 31 रूल, नियम तथा 3 शेड्यूल हैं।
इसमें पूर्व का नियम 1 अगस्त 1961 से 3/9/1968 तक लागू था। रूल नंबर 3, एप्लीकेशन नॉट एप्लीकेबल ऑन एम्प्लॉयज ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS and IFS, Indian Forest Service, RPF up to inspector level, governed by Railway Protection for Act 1957. Casual employee, any person having SPI provision. Part 2, Rule number 4. Authority competent to place under suspension. शेड्यूल 1, 2 एवं 3 में स्पेसिफाइड शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा निलंबित किया जाता है। शेड्यूल 1, एनजे स्टाफ ऑफ रेलवे बोर्ड, RDSO, CTIS, NAIR, RRB, RRT, RLO, etc. शेड्यूल 2, एनजे स्टाफ ऑफ जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स, RE, etc. शेड्यूल 3, ऑल गजेटेड ऑफिसर्स। रूल नंबर 5, सस्पेंशन not classified as punishment, temporarily debarred to come on workplace, attendance marking not required. निलंबन अवधि में वेतन की जगह निर्वाह भत्ता, subsistence allowance देय है, equivalent to half of salary wages. It is effective after acknowledgement. Up to 90 days can be extended further 90 days on recommendation of review committee, but not more than 180 days. Suspension is to be followed by major charge sheet within 3 months. Suspension period not followed by SF5 will be treated on duty. तत्काल प्रभाव से लागू करने हेतु आवश्यक शर्तें। दिए प्रोसीडिंग अनुदेयात कंटिप्लेटेड या लंबित हो, या राज्य के सुरक्षा हित में जरूरी हो, या क्रिमिनल ऑफेंस का कोई मामला इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल में हो। रूल नंबर 5(2) भूतलक्षी रिट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से निलंबन हेतु आवश्यक शर्त। क्रिमिनल चार्जेस या अन्यथा शीर्ष पर पुलिस कस्टडी में 48 घंटे से अधिक लगातार या टुकड़ों में होने पर कस्टडी में डिटेंशन की तिथि से। दहेज उत्पीड़न के मामले में 48 घंटे की कस्टडी की बाध्यता भी अनिवार्य नहीं। 48 घंटे से अधिक के कारावास का कन्विक्शन होने पर कन्विक्शन की तिथि से यदि उसे तुरंत डिसमिस या रिमूव या कंपल्सरी रिटायर नहीं किया जा रहा हो। डिसमिसियल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट के बाद अपीलीय या रिविजनरी प्राधिकारी या माननीय न्यायालय के आदेश से शासित अपास्त सेट असाइड कर यदि फिर से जांच का आदेश दिया जाता है तो डिसमिसियल, रिमूवल या कंपल्सरी रिटायरमेंट की मूल तारीख से अगले आदेश तक। निलंबन के दौरान सुविधाओं पर असर। वेतन की जगह जीवन यापन भत्ता, सबसिस्टेंस अलाउंस, इसका भुगतान नहीं होने पर एक्स पार्टी निर्णय नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट। कार्यस्थल पर जाने की मनाही, परंतु मुख्यालय में उपलब्धता जरूरी। पदोन्नति नहीं, विचारणीय है, परंतु परिणाम सील्ड कवर में रहेगा। वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमेय नहीं, प्रशिक्षण में नहीं भेजा जाएगा। पास/PTO रिड्यूस्ड सीमा में अनुमेय गेज 1/2 ऑफ एडमिसिबल नंबर NG01 if due, स्कूल पास अनुमेय। नो लीव RCP फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन पास/PTO फॉर पार्टिसिपेशन इन JCM/PNM। कोई व्यापार या पेशा इस अवधि में अनुमेय नहीं। Period will be not be considered as qualifying service without specific order. PLB will be paid after revocation. PF की कटौती नहीं, कोर्ट अटैचमेंट से मुक्त। Deductions from subsistence allowance. There are the 3 parts of deductions from subsistence allowance: compulsory deductions, optional deductions, and prohibited deductions. Compulsory deductions: income tax where due, house rent, electricity/water charges, station/stores/workshop debits, diet charges, recovery towards loans and advances taken from government, recovery of loss caused to government. Optional deductions: LIC premium, subscription towards RLI institutes and clubs, cooperative dues, refund of
PF, SBF loans, prohibited deductions, subscription to PF, court attachments, दंड का पदोन्नति / वरीयता पर प्रभाव। दिए गए दंड का प्रकार नंबर 1, परिनिंदा। चयन / पदोन्नति हेतु बुलाना, बुलाया जा सकता है। पदोन्नत करना, पदोन्नत किया जा सकता है। वरीयता, कोई प्रभाव नहीं। दिए गए दंड का प्रकार नंबर 2, आर्थिक क्षति की कटौती। चयन / पदोन्नति हेतु बुलाना, बुलाया जा सकता है। पदोन्नत करना, पदोन्नत किया जा सकता है। वरीयता, कोई प्रभाव नहीं। दिए गए दंड का प्रकार नंबर 3, पास / PTO पर रोक। चयन / पदोन्नति हेतु बुलाना, बुलाया जा सकता है। पदोन्नत करना, पदोन्नत किया जा सकता है। वरीयता, कोई प्रभाव नहीं। दिए गए दंड का प्रकार नंबर 4, वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक। चयन / पदोन्नति हेतु बुलाना, बुलाया जा सकता है। पदोन्नत करना, दंड के दौरान पदोन्नति पर रोक। वरीयता, कोई प्रभाव नहीं। दिए गए दंड का प्रकार नंबर 5, उसी वेतनमान में निचले स्तर पर पदावनत करना। चयन / पदोन्नति हेतु बुलाना, बुलाया जा सकता है। पदोन्नत करना, दंड के दौरान पदोन्नति पर रोक। वरीयता, कोई प्रभाव नहीं। दिए गए दंड का प्रकार नंबर 6, पदोन्नति पर रोक, अस्थायी। चयन / पदोन्नति हेतु बुलाना, नहीं बुलाया जा सकता। पदोन्नत करना, पदोन्नत किया जा सकता है। वरीयता, कोई प्रभाव नहीं। दिए गए दंड का प्रकार नंबर 7, निम्न वेतनमान में पदावनत करना। चयन / पदोन्नति हेतु बुलाना, नहीं बुलाया जा सकता। पदोन्नत करना, दंड के दौरान पदोन्नति पर रोक। वरीयता, वरीयता पर प्रभाव NIP में अंकित किए जाने पर। पार्ट 3, रूल नंबर 6, पेनल्टीज। माइनर पेनल्टीज। फर्स्ट, सेंश्योर। सेकंड, withholding of promotion for a specified period. Third, recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the government or railway administration by negligence or breach of orders. Third, recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the government or railway administration by negligence or breach of orders. This punishment is exception of theory of double jeopardy. Third A, withholding of the privilege passes or privilege ticket orders or both. सेवा अवधि के लिए ही प्रभावी, सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास पर लागू नहीं। थर्ड बी, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे बाय 1 stage for a period not exceeding 3 years without cumulative effect and not adversely affecting his pension. Fourth, withholding of increments of pay for a specified period with further directions as to whether on the expiry of such period this will or will not have the effect of postponing the future increments of pay. Same as provided in clause reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay. 6th, reduction to a lower time scale of pay, grade, post or service with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or survey from which the railway servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to the grade, post or service. 7th, compulsory retirement. 8th, removal from service which shall not be a disqualification for further employment under the government or railway administration. 9th, dismissal from service which shall be a disqualification for further employment under the government or railway administration. 10th,
Any compensation awarded on the recommendations of complaints committee referred to in the proviso to sub rule 2 or rule 9 and established in a unit under the Ministry of Railways for inquiring into any complaint of sexual harassment within the meaning of rule 3C of the Railway Services Conduct Rules 1966. New penalty added by RB number 105/2015, date 8/9/2015. Compassionate allowance, अनुकंपा भत्ता। रेल सेवक पेंशन नियम 1993 के नियम संख्या 65 में इसका विवरण दर्ज है। रिमूवल या डिसमिस होने पर अर्हक सेवा सीज हो जाता है, फलस्वरूप पेंशन तथा उपादान अनुमेय नहीं होता है। यदि डीए चाहे तो उनके जीवन यापन के लिए इनके पेंशन या उपादान या दोनों के अधिक से अधिक 2/3 भाग के लिए अनुकंपा भत्ता की अनुमति दे सकते हैं। दिनांक 1/1/2016 से यह राशि ₹9,000 से कम नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 7, डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज। माननीय राष्ट्रपति रूल नंबर 6 में विनिर्दिष्ट कोई दंड दे सकते हैं। शेड्यूल 1, 2 एवं 3 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार सक्षम अनुशासनिक अधिकारी द्वारा रूल 6 में विनिर्दिष्ट कोई दंड इम्पोज कर सकता है। रेल सेवक यदि हायर पोस्ट पर ऑफिशिएट कर रहा हो तो अनुशासनिक अधिकारी ऑफिशिएटिंग पोस्ट के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। रूल नंबर 8, अथॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स। माननीय राष्ट्रपति स्वयं उनके द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा कोई अन्य प्राधिकारी रूल 6 में उल्लिखित दंड देने हेतु सक्षम अनुशासनिक अधिकारी को डीए की कार्रवाई हेतु निर्देश। रूल 6 में उल्लेखित डीए द्वारा लघु दंड होने में सक्षम परंतु दीर्घ दंड को देने में सक्षम नहीं रहने पर भी दीर्घ आरोप की कार्रवाई की जा सकेगी। रूल नंबर 9, प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग मेजर पेनल्टीज। Total 25 sub-rules in this rule. Serious fraud, misconduct, safety infringement including SPAD, disproportionate asset, bribery, polygamous marriage, etc. Issued on SF5. 4 essential enclosures. Annexure 1, आरोपों का सार, summary of charges. Annexure 2, कदाचार का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ मिसकंडक्ट। एनेक्सर 3, विश्वसनीय प्रलेखों की सूची, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स RUD। एनेक्सर 4, गवाहों की सूची, लिस्ट ऑफ विटनेसेस। रूल नंबर 10, एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। इफ फेल्ट नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, विटनेस मे कॉल्ड, एग्जामिन्ड, क्रॉस एग्जामिन्ड, री एग्जामिन्ड। इफ नॉट सेल्फ IO, may refer further inquiry partially, fully by same IO or new IO. Inquiry report made available to CO. Decide the case or report of IO and defense of CO. If adduced punishment as per gravity of offence is not within his competence, case may be referred to appropriate higher authority. If required, advice from UPSC or RRT/Chennai may be taken. Rule 11, procedure for imposing minor penalty. SF11 used. Misconduct of mild nature, guilty of some blameworthy act or omission. Rule number 12, communication of orders. DA will communicate to CO. Orders made by DA with findings of each article of charges. Pay of commissions advice if not accepted by DA with reasons of non-acceptance. Rule number 13, कॉमन प्रोसीडिंग्स। जहां 2 या अधिक CO शामिल हो वहां सभी COs को डिसमिसियल पदच्युति की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी को DA की कार्रवाई हेतु निर्देशित किया जाता है। यदि सक्षम DA भिन्न भिन्न हो तो अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उच्चतम प्राधिकारी को अन्य प्राधिकारियों की सहमति से नामित किया जा सकता है। ऐसी उपदिष्ट कार्रवाई में रूल 9, 10 तथा 11 के निर्देशों का भी अनुपालन किया जाना आवश्यक है। रूल नंबर 14, स्पेशल प्रोसीजर इन सर्टेन केसेस। नियम 9 से 13 तक की कार्रवाई नहीं पाने की स्थिति में कतिपय मामलों में इस विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस नियम के तहत कार्रवाई अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे स्तर के अधिकारी द्वारा अनुमेय नहीं होता है। सब रूल्स 14(1), आचरण के आधार पर न्यायालय द्वारा दंडित कर्मों की कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। इस बीच कर्मी डीम्ड सस्पेंशन में रहेगा। प्रतिवेदन पर विचार करके
कर्मी को रिमूव या डिसमिस कर दिया जाएगा। 14(2) रेल कर्मी इस नियम को काला पानी की सजा की भी संज्ञा देते हैं। 1974 के हड़ताल में इस नियम का मैसिव यूज हुआ था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के उपरांत इसका उपयोग नियंत्रित हुआ है। जब DA नॉट लेस देन A इस बात से व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हो कि मामले में नियमित जांच कराना युक्ति संगत तरीके से व्यवहारिक नहीं है, तो इस आशय को कारण सहित स्पष्टतः लिखित रूप में रिकॉर्ड करते हुए यदि आवश्यक हो तो UPSC की सलाह लेते हुए दोषी कर्मी को रिमूव या डिसमिस किया जा सकता है। 14(3) जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि राज्य की सुरक्षा हित में नियमानुसार जांच करना उचित नहीं है, इस परिस्थिति में भी ऑफिशियल को रिमूव या डिसमिस किया जा सकता है। Derived from Article 310 of Indian Constitution, removal/dismissal order will be signed by DA. Punished official has right of appeal/revision. Appellate/revisionary authority may permit regular inquiry. Punished official may approach court of law if not satisfied by decision of appellate/revisionary authority. Rule number 15. Provisions regarding railway servants lent to state government etc. Borrowing authority, lending authority. Suspension may be placed but to inform lending authority. Punishment of Rule 6(1)(4) may be given after due consultation by lending authority. In case of difference, replaced to lending authority. Punishment of Rule 6(5)(9) replaced to lending authority with complete case file. Rule number 16. Provisions regarding officials borrowed from central or state government etc. Same process in reverse mode of Rule 15. Borrowing authority, lending authority. Suspension may be placed but to inform lending authority. Punishment of Rule 6(1)(4) may be given after consult by lending authority. In case of difference, replaced to lending authority. Punishment of Rule 6(5)(9) replaced to lending authority with complete case file. Organizational structure of IR Indian Railway versus State. Indian Railway. 7th PC level. 17. Grade Apex. Designation in division. No equivalent post in division. Designation in zone. There is no equivalent post in zone. Designation in Railway Board. Principal Secretary. Designation in State Government. Principal Secretary. Indian Railway. 7th PC level. 16. Grade HAG+. Designation in division. No equivalent post in division. Designation in zone. General Manager. Designation in Railway Board. Additional member staff / plus additional secretary. State Government. Designation in State Government. Secretary. Indian Railway. 7th PC level. 15. Grade HAG. Designation in division. No equivalent post in division. Designation in zone. Principal Chief Personnel Officer. Designation in Railway. Principal Executive Director / Advisor. Designation in State Government. Additional Secretary. Indian Railway. 14. SAG. Indian Railway. 7th PC level. 14. Grade SAG. Divisional Railway Manager / Additional Divisional Railway Manager. Designation in Zone. Chief Personnel Officer Admin / IR. Designation in Railway Board. Joint Secretary / Executive Director. State Government Director. Indian Railway. 7th PC level. 13. Grade NFSG. Designation in Division. Senior Divisional Personnel Officer SR DPO. Designation in Zone. Deputy Chief Personnel Officer. Designation in Railway Board. Director. Designation in State Government. Deputy Secretary. Indian Railway. 7th PC level. 12. Grade JAG. Designation in Division. Senior Divisional Personnel Officer SR DPO. Designation in Zone. Deputy Chief Personnel Officer. Designation in Railway Board. Joint Director.
State government, designation in state government, Deputy Secretary, Indian Railway, 7th PC level 11, grade SR scale, designation in division, Divisional Personnel Officer DPO, Workshop Personnel Officer WPO, designation in zone, Senior Personnel Officer, designation in Railway Board, Deputy Director, State Government, designation in State Government Under Secretary, Indian Railway 7th PC level 10, grade JR scale, designation in division, Assistant Personnel Officer APO, designation in zone, Assistant Personnel Officer, designation in Railway Board, Section Officer, State Government, designation in State Government Under Secretary. Part 5. Appeals. Rule number 17. Orders against which no appeals lies. Orders made by the President. Orders of an interlocutory nature or step in aid nature of final disposal of disciplinary proceeding other than on orders of suspension. Any order passed by IO in course of an inquiry under Rule 9. Rule number 18. Orders against which appeals lies. Suspension. Penalties in enhancing cases also. Disadvantage in pay, allowance, pension, PF, RG, service, conditions, etc. Rule number 19. Appellate authorities. Immediate higher authority in hierarchy. If DA is president, appellate authority will be president also. Rule number 20. Period of limitation of appeal. It should be preferred within 45 days from the date of receipt of NIP. Delay may be condoned if proper reason is explained and seems acceptable. Rule number 21. Form oblique content and submission of appeal. Appeal must be preferred in own name of punished employee. It should not be signed oblique forwarded by legal practitioner oblique trade union official etc. Otherwise shall not be entertained. It should be addressed to proper appellate authority with a copy to DA. Appeal must contain all material statements and agreement on which the appellant relies. Appeal shall not contain any disrespectful or improper language. DA will put up to AA with para-wise comments on appeal. Rule number 22. Consideration on appeal. Fresh DA की तरह का role. May allow fresh inquiry. May allow inquiry in case of Rule 14 also. May confirm, enhance, reduce or set aside the penalty as deemed fit. Rule number 23. Implementation of orders in appeal. DA shall give effects to the orders passed by AA. Rule number 24. Special provisions for NG staff. Associated with NG staff only. Sub-rules. Rule number 1. Reduction oblique withholding of increment or CR or removal or dismissal of NG staff के मामले में एप्लीट अथॉरिटी अपने विवेक अनुसार दंडित एनजी एम्प्लॉय को अपील निस्तारण से पूर्व पर्सनल हियरिंग डीसी के साथ जो उसी रेलवे का कार्यरत या सेवानिवृत्त या ट्रेड यूनियन का कर्मी होगा लीगल प्रैक्टिशनर को छोड़कर का मौका दे सकता है। रूल नंबर 2. सीआर और रिमूव्ड और डिसमिस्ड जीआरसी एम्प्लॉय अपील निस्तारित के 45 दिनों के भीतर रिवीजन हेतु जीएम महोदय को आवेदन दे सकता है। May request GM to take advice of RRT/Chennai before disposal of revision. GM will ask advice of RRT/Chennai which not binding to obey by GM. Rule number 24. Revision request will be decided by GM as per merit. No further scope for revision. This sub-rule is not applicable when appellate authority is Railway Board. 24(3). CR are removed or dismissed erstwhile GRD कर्मी अपील निपटान के 45 दिनों के भीतर रिवीजन के लिए सीधे DRM और मंडल का कर्मी नहीं होने पर संबंधित नियंत्रक SAG को पिटीशन दे सकेगा। रिवीजन पिटीशन पर मेरिट के आधार पर निर्णय।
This sub-rule is not applicable when appellate authority is DRM/SAG or higher officials. No scope of further revision. Rule number 25A. Review. It is not an employee's right. However, he can request only with new material or evidence. A special provision to reopen the case by President at any time, either on his own motion or otherwise, when any new material or evidence which could not be produced or was not available at material time, which has the effect of changing the nature of the case. Reasonable opportunity देना आवश्यक है यदि दंड बढ़ाना प्रस्तावित है। नए सिरे से दीर्घ दंड या लघु दंड को बढ़ाकर दीर्घ दंड देना आवश्यक हो तो नियमित जांच सुनिश्चित कर लिया जाना चाहिए, रूल 14 के मामले को छोड़कर। पार्ट 6, रूल नंबर 25, रिवीजन एंड रिव्यू। This provision added in D&AR/1968 in 1983, replacing review as Rule 25A. Revision petition shall be dealt with in same manner as if it were an appeal under these rules. Revisionary authority will be next higher authority as per hierarchy, not below the rank of JAG. Revision proceeding will commence until after expiry of the period of limitation for appeal or disposal of appeal where preferred. If punishment is proposed to enhance within 6 months from the date of receipt of appellant's orders. If punishment is proposed to reduce within 1 year from the date of receipt of appellant's order. No restriction of time limit when issue is undertaken by GM or equivalent or higher authority. Part 7. Miscellaneous. Rule number 26. Service of order, notices, etc. Every order, notice and other process made or issued under these rules shall be served in person or by registered post only. ज्ञात पते पर गवाह के समक्ष चिपकाए जाने का भी सर्व माना जाता है. Important note: DA have to ensure entry of orders of DA or AA or RA in service record on prescribed page with read link. Rule number 26. A service of order, notices, etc. on behalf of the railway board or president. रेलवे बोर्ड या प्रेसिडेंट के बिहाफ में रेल मंत्रालय के निम्न अधिकारी इस नियम के तहत किसी प्रकार के नोटिस आदेश प्रोसेस ऑर्डर पर हस्ताक्षर हेतु सक्षम होंगे. सेक्रेटरी आरबी जॉइंट सेक्रेटरी डीवाई सेक्रेटरी. एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर. रूल नंबर 27. Power to relax time limit and to condone delay. इन नियमों में अन्यथा स्पष्टता उपबंधित के सिवाय सक्षम प्राधिकारी उचित और पर्याप्त कारण से संतुष्ट होने पर विनिर्दिष्ट समय बढ़ा सकता है या विलंब को माफ भी कर सकता है. रूल नंबर 28. सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ कमीशंस एडवाइस. यूपीएससी की एडवाइस यदि ली गई हो तो उसके प्रति, और यदि एडवाइस को स्वीकार नहीं किया गया है तो अस्वीकृति के कारणों का संक्षिप्त विवरण की प्रति भी दंडित कर्मी को देना आवश्यक है. रूल नंबर 29. रिपेल एंड सेविंग. 1 अगस्त 1961 से प्रभावी अनुशासन एवं अपील नियम 1/10/1968 से निरस्त. 1 अक्टूबर 1968 से पूर्व के मामले पूर्व के प्रभावी नियमों के अनुसार निस्तारित होंगे. रूल नंबर 30. रिमूवल ऑफ डाउट्स. इन नियमों के किसी प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन में यदि कोई शंका हो तो उसे रेलवे बोर्ड के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति को रेफर किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम माना जाएगा. रूल नंबर 31. राइट टू सबमिट पिटीशन टू द प्रेसिडेंट. एस्टैब्लिशमेंट कोड के प्रोविजंस के अनुसार प्रत्येक कर्मी को राष्ट्रपति को याचिका प्रस्तुत करने का अधिकार इन नियमों के किसी प्रावधानों से वंचित नहीं होगा.